Hello student, I am Dr. S. Kandai, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Plant Tissue Culture, that is PTC. And in this PTC we are going to learn organogenesis. The word and terminology itself is explanatory. So here you can see organ and genesis. In synthesis of organ or formation of organ through plant tissue culture. So let us see the contents. So here are the contents. What is organogenesis? Organogenesis क्या है? Principle of organogenesis, process of organogenesis, relevant factors for organogenesis, phyto hormones in organogenesis, and significance of organogenesis. So this is the content that we're going to learn in this presentation. So first of all, let us see the definition. So here, what is organogenesis? अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि organogenesis क्या होता है. Here I have defined the organogenesis, development of organs or primordia or plantlet from differentiated, that is mature plant cell, directly or indirectly, that is via callus formation under in vitro conditions. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होता है ऑर्गन्स का और प्रिमोर्डिया का, isn't it, और प्लांटलेट का, तो किस सेल से, तो डिफरेंशिएटेड यानी कि मैच्योर सेल जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो मैच्योर सेल से हम ऑर्गन बना सकते हैं या प्लांटलेट बना सकते हैं. सो दिस प्रोसेस कैन बी डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो इन डायरेक्ट मेथड देर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कैलस, और इन इनडायरेक्ट मेथड कैलस फॉर्मेशन ऑकर्स. और ये जो भी होता है इट इज़ इन controlled condition, that is in vitro condition. So therefore development of organs or primordia or plantlet from differentiated mature plant cell directly or indirectly, that is via callus formation under in vitro condition, is called organogenesis. तो ऑर्गन का फॉर्मेशन यानी ऑर्गन का जेनेसिस करने की ये पूरी प्रक्रिया होती है. ये प्रक्रिया प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर पाई जाती है. So this is the definition of organogenesis. Now what are the principle of organogenesis? Organogenesis के principle क्या होते हैं? Organogenesis are of two types. Direct organogenesis, isn't it? By using explant to organ. तो explant से direct हम organ बना सकते हैं या फिर plantlet बना सकते हैं. And in indirect organogenesis, the explant is cultivated or cultured to form callus, and then it is converted or treated to form organs or plantlet. तो ये जो होता है ये indirect organogenesis होता है. So in indirect organogenesis there is formation of callus. So what is callus? As I have told you in previous lectures, callus is nothing but it is a group of similar cells, undifferentiated mass of cell. जो सेल के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सब सेल एक जैसे ही होते हैं, ऐसे जो सेल का एक क्लस्टर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कैलस. सो हियर यू कैन सी दैट ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो एक्सप्लांट यूज़ किया जाता है वो एक्सप्लांट से ही डायरेक्ट ऑर्गन या प्लांट बन जाता है. बट इन इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एक्सप्लांट इज converted into callus, and from the callus either organ or plantlet can be developed. So this is the principle of organogenesis. Organogenesis is in vitro procedure of development of plant organs from mature plant parts of plant. So what happens here, the mature plant cell is forced or induced to produce organs or plantlet. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लांट की सेल जो मैच्योर होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, उस मैच्योर और डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल को रिवर्स करके फिर से उसके पास उसके मार्फत हम एक तो ऑर्गन बना सकते हैं, कोई भी प्लांट का ऑर्गन बना सकते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, एम्ब्रियो, सीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
या तो फिर पूरा के पूरा प्लांट बना सकते हैं. So therefore organogenesis, the name and this word itself tells you that formation of organ in laboratory or in under controlled condition. So this thing you have to understand, and that is the principle of organogenesis. Cells from mature plant body are differentiated and specialized on. So now you can see the plant which grows naturally produces different organs such as root, stem, leaves, fruit, flowers, etc., etc. And every plant cell gradually becomes specialized one, isn't it? And this mature and specialized plant cell can be induced, and from that plant cell or tissue we can generate organs or plantlet. So that is the principle in plant tissue culture. The mature and specialized cell is used in PTC as explant. So as I told you, the explant is nothing but the part or cell or tissue which is used in plant tissue culture is called explant. Therefore, the mature and specialized cells are used in plant tissue culture. तो mature or differentiated जो cell होती है, that cell is used in plant tissue culture as explant, and then this explant is converted into different organs. The mature, that is differentiated. Now here you can see these are the synonymous terminologies. Mature means differentiated cell of the plant. The mature, that is differentiated cell, is induced to undergo a process of differentiation, then redifferentiation, and then organogenesis. Organogenesis होता है. तो ये प्रक्रिया है, पहले क्या होता है कि जो सेल मैच्योर होती है, और वो सेल जिसे जो मैच्योर होती है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, isn't it, which is a specialized cell. And this specialized cell which is differentiated is induced to undergo a process called de-differentiation. डिफरेंशिएटेड सेल को एक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन. और उसके बाद फिर उसका रीडिफरेंशिएशन हो जाता है, एंड दिस रीडिफरेंशिएशन लीड्स टू ऑर्गेनोजेनेसिस. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थीम इन प्लांट टिश्यू कल्चर. तो इसके अंदर ये जो थीम है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, बिकॉज ये प्रोसेस है, दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस विच ऑकर्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर. सो दिस थिंग यू हैव टू सी हियर. डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएटेड जो प्लांट सेल होती है उसको रीडिफरेंशिएट किया जाता है, और रीडिफरेंशिएटेड करने के बाद उसको डी डिफरेंशिएट किया जाता है, और डी डिफरेंशिएटेड जो सेल होती है उसको फिर ऑर्गेनोजेनेसिस उसका किया जाता है. दैट इज़ द थिंग. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, और दिस इज़ द बेसिक थीम और आइडियोलॉजी behind plant tissue culture or organogenesis. So for that reason I have highlighted this word: differentiated, de-differentiated, and redifferentiation, and then organogenesis. So this is the theme of organogenesis. The process is governed by genetic, physical, and biochemical conditions. So what are the factors that mostly influence this organogenesis? So here you can see the process is governed by genetical factors, physical factors, and biochemical factors. तो जेनेटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द सेल इज अंडर द गवर्नेंस ऑफ genetics. So genes are very, very important. So therefore genetical factors plays a vital role. Then physical factors क्या होते हैं? So for example external factors जैसे कि oxygen, air, humidity, temperature, etc. These are the physical conditions. And then biochemical conditions in the cell or in the petri dish in laboratory. So biochemicals include all the chemicals, including nutrients, isn't it? Nutrients, then phytochemicals that are very, very important. Phytochemicals are very significant, isn't it?
बायोकेमिकल कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फाइटोकेमिकल्स। बाकी के तो फाइटो यानी कि केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे बायोकेमिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So in this way you can see these are the things that govern the process of organogenesis, isn't it? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, ये प्रोसेस क्या होते हैं, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसका प्रोटोकॉल क्या है. द मैच्योर डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल, इजंट इट. जैसा मैंने बताया कि मैच्योर जो सेल होती है उसको डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल कहा जाता है. एंड दैट प्लांट सेल वी आर यूजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लांट सेल विच इज डिफरेंशिएटेड, इट शुड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, इजंट इट. तो पूरा आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर ये डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, isn't it? We have to provide all the artificial conditions that leads to this differentiated cell to become de-differentiated. So this is the reversible process. We are reverting this senescent or matured differentiated cell to the what you can say the डी-डिफरेंशिएटेड स्टेटस. उसका जो स्टेटस होता है डिफरेंशिएटेड सेल जो मैच्योर होती है उसको रिवर्स पोजीशन में उसको डी-डिफरेंशिएशन के माध्यम से पीछे लिया जाता है. उसका प्रोसेस जो आगे बढ़ता है नेचुरल प्रोसेस, उसको रिवर्ट करना होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड डी-डिफरेंशिएशन. और फिर उसका री-डिफरेंशिएशन किया जाता है, इजंट इट. सो दिस इज द basic fundamental idea. Differentiated plant cell is de-differentiated and then it is re-differentiated. So these are the important steps that you have to understand and you have to keep in mind while learning this organogenesis. Then there would be development of chiarus, or you can directly go for organogenesis. So both options are open here, isn't it? Either you can go for careless development, or you may start organogenesis or callus formation, whatever it may be, depending upon the things and depending upon the need the one researcher wish to follow. Now here you can see this is the arrow, and this arrow indicates the important things that is required for organogenesis. So first of all you can see here phytohormonal balance. So here you can see the phytohormonal balance, and this phytohormonal balance is very very important because phytohormones plays vital role in PTC, that is plant tissue culture. For example, auxins and cytokinins, these are the vital phytohormones, isn't it? These are the prime phytohormones that are used in PTC. That is auxins and cytokinins. Then nutrients. Supply of macro and micronutrients along with all the vitamins are very very important, isn't it? So nutrient, that is nutrient media which is provided to the cell or tissue is very very important, and it plays a vital role because it navigates all the development of the further organogenesis, isn't it? That is phytohormones, yes, auxin and cytokinins. Then nutrients. Along with this, physical factors are very very important, that is external conditions such as light, darkness, isn't it? Light and darkness plays vital role in photoperiodism, isn't it? Because every plant cells can sense the light and darkness. So light and darkness are very very important, that is. And then availability of oxygen, carbon dioxide, isn't it? Temperature, etc etc. These are the important things that are very important in this process. So therefore you can understand how these things are vital for plant tissue culture. So these are the steps
And when once you make the culture, and this culture it can be transformed into this undifferentiated mass of cell. This is called callus. So here you can see this is the callus formation, isn't it? Once you cultivate the cell or tissue, there is you can produce this undifferentiated mass of cell called callus. This is the undifferentiated mass of cell. So here you can see the undifferentiated mass of cell, callus. Then you can induce this callus to produce shoot. So here you can see shoot formation is taking place, and this shoot or root formation depends upon the exact balance and quantity of this auxin and cytokinin. So auxins promote root formation and cytokinins promote shoot formation. So accordingly you can manage and balance these two phytohormones. If you want rooting, you can apply more quantity of auxin compared to cytokinin, and if you want shooting, that is formation of shoot, you can apply this cytokinins. And if you don't want to develop any kind of organs, instead you want to keep the cultivated cell in the state of callus, you can apply this auxin and cytokinin in equal amounts. So that is the general understanding and general formula for developing callus as well as developing organs. So here I have shown this shoot is being developed here. So here this thing you have to understand, shoot development occurs depending upon this phytohormones. Now here you can see this from this callus, that is induction of shoot and root. So this proper application of auxin and cytokinin can induce shoot formation as well as root formation. So organs can be developed. So here you can see that organs can be developed from a mature or differentiated plant cell. So this is the general methodology or general protocol for organogenesis. Now steps in organogenesis. So what are the common steps or general steps that has to be followed during organogenesis? First of all, you have to select the proper explant, such as part of stem, part of leaf or root. So whatever it may be. So depending upon the different plants and need, one can select the proper explant, isn't it? Either it may be stem, leaf or root. And this stem, leaf or root, which is explant, it is sterilized. So now sterilization is a vital process in plant tissue culture, because sterilization avoids contamination and interference of unwanted organisms, microbes such as bacteria and fungi. So therefore sterilization plays a vital role. So you have to sterilize this explant. ये एक्सप्लांट जो होते हैं इसको स्टरलाइज करना पड़ता है वाटर के साथ. उसके बाद में फिर you can use different chemicals, isn't it? Mercury chloride, isn't it? उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड एक्सेट्रा. तो ये यूज़ करके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज़ करके आप इसको स्टरलाइज कर सकते हैं. तो स्टरलाइजेशन के लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं. यू हैव टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो. ये सब करना है आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. सो स्टरलाइजेशन होने के बाद देर इज वन प्रोसेस कॉल्ड इनैक्युलेशन. सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस explant first sterilized, and this sterilized explant is introduced into nutrient media under proper condition. That is called inoculation in sterile nutrient media, that is MS media, Murashige Skug media. It is a general media which is used commonly in PTC for organogenesis. So inoculation means introduction of explant into the nutrient media under proper sterile condition.
especially by using laminar airflow. So in laminar airflow, you can do this process of inoculation. So after completing inoculation, requisite supplements such as physical and biochemical. So this I have told you that physical supplements includes temperature, then humidity, water, then light, darkness, etc. etc. All these physical supplements or conditions should be provided. Biochemicals include all the nutrient, macro, micronutrients, vitamins, vital amines, that is vitamins, and then proper phytohormones. So this thing you have to do, and you have to follow all this protocol. ये करने के बाद you can see there is a development of callus and there is development of tissue. You can go for subculturing and maintenance of callus for more duration. If you want to maintain that callus for further duration, then you have to do subculturing, because callus cells does not survive or cannot remain viable for longer period. So it needs subculturing, isn't it? Because senescence is also going on in the cultured cell, isn't it? And senescence cause loss of vitality and growth. So subculturing is essential and maintenance of this callus for more duration. अगर कोई कुछ महीनों और सालों के लिए आपको वो callus रखना है तो subculturing जरूरी है. Then you may go for callus formation or organogenesis, depending upon the need, isn't it? So therefore phytohormonal treatments, isn't it, for direct organogenesis, isn't it? So in direct organogenesis there is no callus formation, isn't it? जब हम एक्सप्लांट को डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करना चाहते हैं तो वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा, इज इट? सो डायरेक्टली फ्रॉम दिस टिश्यू और सेल यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस, इज इट? डायरेक्टली ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रक्रिया हो सकता है वहाँ पे इफ़ यू वांट, इज इट? सो दिस इज द डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस. ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड, और इनडायरेक्ट अगर नहीं चाहते हो तो यू कैन गो फॉर कैलस फॉर्मेशन, isn't it? So these are the steps you can go for these two things, that is for organogenesis directly or indirectly depending upon the need. So if you provide proper phytohormones, there is development of organ or plantlet. If you want to develop organ, you can develop the organ, stem, root, leaf, seed, embryo, etc. etc. Or you may go for development of plant, isn't it? Plantlet. So small plantlet can be developed in laboratory. So these are the steps and this is the protocol that is to be followed during organogenesis. Now relevant factors for organogenesis, isn't it? Organogenesis can be successfully achieved under proper condition when the relevant factors are adequate. So what are these factors? Size of the explant, this is an important relevant factor. The larger explant are better because larger explants comprise different cells, isn't it? If the explant has all the required cells, and that explant would proliferate properly, isn't it? That can be cultivated properly. So therefore size of the explant should be preferably larger, isn't it? Then source of the explant. So the explant you are selecting is also very meaningful. Therefore source of the explant, isn't it, is important. Various explant has different regenerative abilities, isn't it? Some roots develop better organogenesis,
some shoots or leaf cells are very suitable for organogenesis. In some plant species, root cells are very important for organogenesis. So therefore, depending upon the source of the explant, isn't it? The source of the explant is also vital and important in organogenesis. So these factors we have to consider while doing these things. Then age of the explant. New and old explant has varying abilities. Middle aged is preferable. So here you can see that nascent cell, isn't it, or juvenile cell, that is a newly formed cell, is not that much suitable for PTC. Similarly, the old cell or old cell explant is also not suitable. So therefore, middle aged cell or tissue are preferable, isn't it? So वो सेल का और टिश्यू का एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इट मैटर्स because you know that aging plays a vital role, and it affects to the chromosome number as well as the functioning of the cell, isn't it? Because senescence is the process where the ability of the cell is declined. So therefore, middle-aged cell is preferable. Then you can see light and dark periods, isn't it? As I told you, the plant is very sensitive to light and dark periods. प्रकाश और अंधेरा दोनों भी प्लांट सेल को समझता है. प्लांट सेल के अंदर जो सेंस होता है, दे कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ द लाइट एंड डार्कनेस. दोनों भी समझते हैं उसको, प्लांट को. सो देयरफॉर these light and dark periods are also very important. Generally 2000 to 3000 lux for 10 to 16 hours is required. It is a general, but it varies from species to species, isn't it? So proportionate darkness is needed. So light and darkness should be proportionate depending upon the plant species. So whatever plant species you are using, so depending upon the particular plant species, you have to determine the photo period that you have to apply in vitro condition. The nutrient media is also important. As I told you, nutrition, supply of macro and micro elements along with vitamins, amino acids as per the need for regulation of organogenesis. So this is naturally an important thing, isn't it? वो सेल और टिश्यू जिंदा है तो उसके लिए खाने के लिए कोई प्रबंध करना चाहिए. तो उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, isn't it? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है तो मैक्रो में आ जाते हैं. और बाकी जो सॉल्ट्स है, सोडियम, isn't it? और समझो पोटेशियम, इस प्रकार के जो होते हैं, isn't it? These are the माइक्रो एलिमेंट्स. विटामिन भी होते हैं, isn't it? तो ये पूरी चीज़ें जो हैं वी हैव टू सप्लाई टू द डेवलपिंग सेल अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, एंड वी प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स इन न्यूट्रिएंट मीडिया, isn't it? Whatever media we are preparing, that is MS media, Murashige Scoop media, isn't it? That is very suitable media. So in that media we are providing all these things. pH of the culture is also important, isn't it? So pH is also very important. We have to maintain the pH, and this is a general range, 5 to 6, isn't it? It is general range of the pH that is maintained, but it varies from species to species again. Chromosome number, isn't it? This thing is also very important. Chromosomes plays a vital role. Generally diploid plant cells are best suited for PTC, isn't it? You have to understand diploid plant cells are important compared to polyploids, aneuploids. These conditions are
not that much suitable for PTC, because they doesn't support the regenerative ability, isn't it? Polyploid, aneuploid plant cells are generally non-regenerative, isn't it? तो उसके अंदर जो होता है क्रोमोसोम नंबर, दैट क्रोमोसोम नंबर शुड बी जनरली डिप्लॉयड, ये होता है डिप्लॉयड, तो पीटीसी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं. Then comes the most important thing, that is biochemical, isn't it? So phytohormones are the essential and vital biochemicals, isn't it, in PTC, and it regulates the process of organogenesis, isn't it? Therefore, PTC could be regulated directly through supplementation of oxygen is to cytokinin ratio. इसके अंदर तो फाइटो हार्मोन्स बहुत सारे हैं, isn't it? ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, isn't it? जिबरलिन्स है, जास्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है. इस प्रकार के बहुत सारे फाइटो हार्मोन्स अवेलेबल है. लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन रेशो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस रेशो इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव फॉर कैलस formation. So accordingly you have to maintain this ratio, oxygen cytokinin ratio, because oxygen supports formation of rooting and cytokinin support the shooting, and the ratio is very very important in order to balance and in order to navigate the process of PTC, plant tissue culture. So what do you desire depends upon this balance of phytohormones. So these are the relevant factors that you have to take into consideration. So I have enumerated these 8 points, and you can also add more points or more relevant factors for organogenesis. So these things you have to take into consideration. फाइटोहार्मोन्स आर सिग्निफिकेंट इन ऑर्गेनोजेनेसिस. जैसे मैंने बताया कि फाइटोहार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पीटीसी के अंदर. सो इम्पॉर्टेंट फाइटोहार्मोन्स कौन से हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सिन, उसके बाद में साइटोकाइनिन होते हैं, जिबरलिन्स, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जास्मोनेट्स, पेप्टाइड्स, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स. So these are some common important phytohormones, isn't it? So these phytohormones are one can use during PTC. So here is the chart that shows you these phytohormones and their general functions. So here you can see plant hormones, isn't it? So these plant hormones can be categorized into 2 categories, that is growth promoters and growth inhibitors. So there are certain hormones that they promote the growth of the cell or tissue, and these are auxins, gibberellins, cytokines, salicylic acid. So these are categorized in growth promoters. On the contrary, you can see growth inhibitors. तो ये जो ग्रोथ होते हैं वो प्लांट सेल की, उसको इनहिबिट करके रखते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं. ये है इथिलीन, एब्सिसिक एसिड एंड जास्मोनेट. सो दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स. सो दीज फाइटो हार्मोन्स आर at your hand. So with the help of these phytohormones you can regulate the process of organogenesis. तो ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इन विट्रो कंट्रोल, इज़न्ट इट. लेबोरेटरी के अंदर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं. आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, कौन सा ऑर्गन आप डेवलप करना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन रेगुलेट the process of organogenesis. So here is another chart that indicates different hormones. So here you can see these are the phytohormones. As I have told you, number of phytohormones are there. The important phytohormones are listed here: auxins, isn't it? Cytokinins, gibberellins, ethylene, abscisic acid, salicylic acid, jasmonate, etc., etc. And here you can see the common and
simple functions of these hormones. Auxins promote growth and maturity, flowering, development of fruit. So these are the some important functions that is controlled by these auxins. तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मैंने ये 2-3 बता दिए आपको यहाँ पे. बहुत सारे उसके फंक्शंस होता है, लेकिन ये उसके कुछ फंक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे आपके सामने रखे हैं. देन इथिलीन का ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे देखेंगे आप, फ्लावरिंग है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है, अब्सेशन होता है, तो उसमें ये इथिलीन काम आता है. उसके बाद में जास्मोनेट है, ये भी इसके फंक्शंस मैंने यहाँ पे बताया कि प्लांट प्रोटेक्टर होता है, रिपेयर द डैमेज. तो प्लांट के सेल के अंदर कोई डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने के लिए जास्मोनेट फंक्शन करता है. ये प्लांट प्रोटेक्टर भी है ना. जास्मोनेट इज सिक्रेटेड व्हेन प्लांट इज अंडर स्ट्रेस. प्लांट के अंदर कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जास्मोनेट होता है. सैलिसिलिक एसिड इज देयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोल करता है. इट इज़ ऑल्सो ए प्लांट प्रोटेक्टर. देन कम्स एब्सिसिक एसिड. Abscisic acid is also very important plant hormone. That is it breaks seed dormancy or abscission. यानी कि जो पत्ता होता है, जो मैच्योर पत्ता, उसको प्लांट से डिटैच करने में एब्सिसिक एसिड फंक्शन करता है, isn't it? जब पतझड़ होती है तो उस वक्त एब्सिसिक एसिड का बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है, एब्सेशन करता है वो. एब्सिसिक एसिड मेक्स एब्सेशन एंड देन that matured and dead leaves can be shed by the plant. So in that process abscisic acid is important. So cytokinins you can see here, it regulates growth and maturity, flowering, development of fruit. cytokinin सेल डिवीजन भी करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है प्लांट ऑर्गन की. जिबरलिन्स भी होते हैं. जर्मिनेशन, ड्यूरिंग जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग, isn't it, breaking of the seed dormancy. So during that process, gibberellins play vital role. Growth and maturity, then flowering, development of fruits, etc. So here you can see this is summarized chart that tells you the different function of the different phytohormones. So in this way you can see these phytohormones are very vital and significant, isn't it? Organogenesis. तो इस प्रकार से इसको रेगुलेट करना है हमें. सो रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस विथ फाइटोहार्मोन्स, यहाँ पे है एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है. हियर यू कैन सी इनिशियल कैलस इज देयर, न्यूट्रिएंट आगर मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब. सो हियर नो ऑक्सिन, ओनली साइटोकाइनिन. तो यहाँ पे साइटोकाइनिन उसको देने के बाद सिर्फ यहाँ पे कैलस डेवलप होता है. सो हियर यू कैन सी सेल डिवीजन टेकिंग प्लेस इन द एक्सप्लांट ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया एंड इनिशियल कैलस इज developed with the help of cytokinin, isn't it? So in this way you can see how the PTC or organogenesis is regulated, isn't it? Intermediate auxin and cytokinin. अभी ये intermediate auxin and cytokinin का रेशो मेंटेन करने के बाद you can see callus formation is there, isn't it? ये callus को हम मेंटेन कर सकते हैं by providing equal amount of auxin and cytokinin. सो कैलस फॉर्मेशन ऑकर्स. तो यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो रहा है. अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पूरे के पूरे सेल एक जैसे ही हैं. इट इज़ ए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड कैलस, इज इट. सो इस प्रकार से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए बताया है रूट फॉर्मेशन हो रहा है. वाई रूट फॉर्मेशन इज देयर? बिकॉज हाई क्वान्टिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड कंपेयर टू साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन की मात्रा कम करके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ पे उस कैलस को रूट डेवलप होते हैं. सो हियर यू कैन सी द कैलस डेवलप्स रूट व्हेन ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इन मोर क्वांटिटी कंपेयर टू साइटोकाइनिन. तो इन दिस वे यू कैन सी यू कैन रेगुलेट और मेंटेन the condition and organ formation depending upon the phytohormones. So here you can see shoot development is there. So low oxygen and high cytokinin, तो shoot develop हो रहा है, isn't it? So here you have to maintain the ratio of oxygen cytokinin, isn't it? So here shoot formation
when cytokinin is provided in more quantity compared to oxygen. So in this way you can see organogenesis is the process can be navigated and can be regulated and can be controlled with the help of phytohormones, isn't it? So regulation of organogenesis with phytohormone. So here you can see in this way you can regulate the process of organogenesis with the help of phytohormones. So this is the thing. So ऑक्सीन साइटोकाइनिन रेशो जो होता है, साइटोकाइनिन रेशो एंड ऑक्सीन का रेशो जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे मैंने बताया ये ऑक्सीन है, ये साइटोकाइनिन है, इजंट इट. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीन प्लस साइटोकाइनिन तो किस प्रकार से होता है. अब जब ऑक्सीन का क्वांटिटी या प्रमाण ज़्यादा होता है तो यहाँ पे रूट फॉर्मेशन होता है, इजंट इट, ऑन कटिंग्स. कैलस इनिशिएशन इन मोनोकॉट्स, इजंट इट. फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, isn't it? So these pyramids are indicating the ratio of oxygen to cytokinin. So here you can see the inverted position of this pyramid indicates the high quantity in this region of oxygen and low quantity of cytokinin in this region. तो यहाँ नीचे नीचे साइटोकाइनिन का प्रमाण बढ़ते चले जा रहा है. अब जब वो साइटोकाइनिन का प्रमाण बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, isn't it? Axillary shoot proliferation in shoot cultures, isn't it? शूट का प्लोरिफरेशन हो रहा है, शूट फॉर्मेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन का प्रमाण ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है. ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा है और साइटोकाइनिन का प्रमाण कम है, तो यहाँ पे रूट फॉर्मेशन हो रहा है. तो इस प्रकार से आप जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसको इस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिटेड. उसको साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का जो प्रमाण है कम ज़्यादा करो और इस प्रकार का रिजल्ट पाओ, इजंट इट. तो यहाँ पे आप देखते हैं कैलस इनिशिएशन इन डाइकॉट्स. अब यहाँ पे देखिए ये इक्वल अमाउंट है, इजंट इट. ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन आर इन इक्वल क्वांटिटी, सो देयर इज कैलस फॉर्मेशन, इजंट इट. अभी जैसा देख रहे हैं कि ये जो इसका प्रमाण होता है ये रेगुलेट करता है साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का ये रेशो. सो इन दिस वे यू कैन सी दिस इज द चार्ट दैट इंडिकेट्स द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर क्वांटिटी यू कैन रेगुलेट ऑर्गेनोजेनेसिस. तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनोजेनेसिस को रेगुलेट किया जाता है. अब ये सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्गेनोजेनेसिस का, इसका महत्व क्या है, व्हाई ऑर्गेनोजेनेसिस इज रिक्वायर्ड और डन इन लेबोरेटरी. तो उसका महत्व यह है ऑर्गेनोजेनेसिस का, प्रिजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ एंडेमिक एंड इकोनॉमिकली यूजफुल प्लांट स्पीसीज. अब हम देखते हैं कि कुछ प्लांट स्पीसीज जो है कुछ रीजन तक सीमित हो गई या कहीं से नष्ट भी हो जा रही है. तो वो जो प्लांट स्पीसीज है उसका प्रिजर्वेशन हम प्रोपेगेशन एंड प्रिजर्वेशन हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, इजंट. कोई दुनिया की एक कोने में कोई प्लांट है तो दूसरे कोने में उसका प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, उसका प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं इन लेबोरेटरी. सो देयरफॉर एंडेमिक एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू दिस ऑर्गेनोजेनेसिस. इसका जो प्लांट्स होते हैं जो बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, उसका प्रिजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं. तो ये सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनोजेनेसिस का. You can develop haploid plant production from pollen culture. So haploid plant production is also one of the important aspect in the plant development or plant culture or plant research. So haploid plant can be developed from pollen culture, isn't it? जो पोलन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड पोलन से हम हैप्लॉइड प्लांटलेट डेवलप कर सकते हैं. स्पेसिफिक ऑर्गन कल्चर फॉर स्पेशल पर्पसेस, isn't it? Some plants has specific organs that are economically important, isn't it? कुछ plants जो होते हैं उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, isn't it? तो जैसे कि कुछ प्लांट के रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्लांट के लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्लांट के स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ प्लांट के बार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वो जो ऑर्गन होता है वो प्लांट का वो हम कल्चर कर सकते हैं. हमें पूरा प्लांट
कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्लांट का पार्ट हमें चाहिए वो हम लेबोरेटरी के अंदर कल्टीवेट करके वही प्लांट से हम कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्गन कल्चर फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। Dormant seeds inhibit normal propagation of plants, hence PTC and organogenesis paves way for plant propagation. So there are some plants and their seeds are inviable, and these seeds could not germinate, and therefore germination is inhibited in case of some plants. So therefore their propagation needs PTC. ऐसे जो कुछ प्लांट है जिसका सीड जर्मिनेट ही नहीं होता है, उसका सीड डॉर्मेंसी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इस प्रकार के प्लांट जो होते हैं तो उसका प्लांट टिश्यू हम कल्चर करके ऑर्गेनोजेनेसिस कर सकते हैं और वो प्लांट का प्रोपेगेशन भी हम कर सकते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, सीड्स, एम्ब्रियोज एंड एंटायर प्लांट कुड बी रीजनरेटेड एंड प्रोपेगेटेड थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस। तो रूट है, स्टेम है, लीफ है, सीड है, एम्ब्रियो है, ये कुछ भी हम रीजनरेट कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस, isn't it? प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक प्लांट बायो प्रोडक्ट्स। सो और कुछ ऑर्गन के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल्स होते हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकली इम्पॉर्टेंट, मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कुछ बायोकेमिकल्स होते हैं, एंड दीज बायोकेमिकल्स आर प्रेजेंट in certain parts of the plant, so we can cultivate and culture these plant parts, isn't it? Organ culture करके हम उसके अंदर का जो भी biochemical है, that biochemical can be extracted in laboratory through these organs. So इस प्रकार से this is the significance of organogenesis. So hope you understood all these things. So I recommend that you have to view this presentation repeatedly. You can repeat it as per your wish. You can pause, you can take the snap, a screenshot, and you can prepare your own notes by using this presentation. So thank you very much, friends, and hope you understood these things, and I wish you best luck for this purpose.